Now, the Chief Justice of India, Chandrachud, had a homecoming of sorts yesterday as he was felicitated at his native village in Maharashtra's Khed. Addressing the residents of Kanhersar village near Pune, the Chief Justice of India spoke about occasions during his time in the judiciary when the path forward would appear unclear. He harkened back to the time when he was part of the 5-judge Supreme Court bench that had heard the historic Ayodhya case. Reflecting on how the case was heard for several months, he recounted how it appeared at times that there may be no path forward as the dispute had remained unresolved for hundreds of years. He then mentioned how when he would pray, he'd sit before God and ask God himself to provide a solution. Here's what the Chief Justice of India said. मी भारताचा सरन्यायाधीश झालो. कित्येक वेळा काम करताना असं होतं बघा कोर्टात की ह्याचा पर्याय काय आहे, ह्याचा सोल्युशन काय आहे हे सुचत नाही आपल्याला. जेव्हा मी अयोध्येचं काम माझ्या पुढे आलं होतं, आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही ते काम आमच्या पुढे आलं होतं. आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं. ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल. त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात. आणि आपल्याकडे कन्हेरसरला जमाई देवीचं मंदिर आहे. मी देशभर कितीतरी फिरलो गेले 2 वर्षात. आणखीन क्वचितच कन्हेरसर सारखं सुरेख सौंदर्यपूर्ण गाव दिसायला मिळतं. आपण आज इतक्या मोठ्या संख्येत इथे आलात आणि माझा हा सत्कार केलात त्याच्यासाठी मी आपला आभारी आहे. आपले धन्यवाद मानतो आणि आपला निरोप घेतो. Now, the India bloc is not holding back its punches over the comments made by the Chief Justice of India. The Samajwadi Party member of Parliament has now unleashed filthy abuse as a shocking rant from Ram Gopal Yadav, senior leader of the Samajwadi Party. He's Akhilesh Yadav's uncle, who's used profanities in response to the Chief Justice of India's comments. He's abused him. Let's listen into that rant. कोई कमेंट नहीं करा. ये छोड़ो क्या था ये जो जब भूतों करते हो मुर्दों भूत बन जाता है जब तक के पीछे पड़ गए. डोंट टॉक प्रॉब्लम्स ना दे आपको दे आप जी कौन सब कहां है. तो आपकी बावरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है. नहीं सर, रविवार की बात है. CJI का बयान आया तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम. कोई कमेंट नहीं करा. ये छोड़ो क्या था ये जो जब भूतों करते हो मुर्दों भूत बन जाता है जब तक के पीछे पड़ गए. डोंट टॉक प्रॉब्लम्स ना दे आपको दे आप जी कौन सब कहां है. तो आपकी बावरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है. नहीं सर, रविवार की बात है. CJI का बयान आया तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम. कोई कमेंट नहीं करा. ये छोड़ो क्या था ये जो जब भूतों करते हो मुर्दों भूत बन जाता है जब तक के पीछे पड़ गए. डोंट टॉक प्रॉब्लम्स ना दे आपको दे आप जी कौन सब कहां है. तो आपकी बावरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है. नहीं सर, रविवार की बात है. CJI का बयान आया तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम. Well, let me go across to Mohit Bhatt as well as Sabyasachi joining us right now. Mohit, coming to you first and foremost. One can have a disagreement with the views that were, of course, expressed by the Chief Justice of India. We live in a democracy and politicians have a right to disagree. However, when it comes to downright abuse of the kind that Mr. Ram Gopal Yadav has used, one has to basically question his actions right here, Mohit. Absolutely crass remarks coming from a senior politician. Well, Siddhant, yes. And as you rightly said, in a democracy, everybody has a right to criticize. They can criticize their political opponents and they can criticize the institutions too. But there has to be done in a limit, in a way that a decent society behaves. Now, we have seen that how the opposition parties are coming out. They are criticizing the statement that have come out from CJI. But we see that how Ram Gopal Yadav he has used filthy remarks against the CJI, which is something
which is very, very shocking, because Ram Gopal Yadav is a senior politician. He has been a member of parliament a multiple number of times. He is somebody who is known for his political acumen, but he is making such statement which is very shocking and which is very derogatory in nature. So we have to wait and watch how exactly the Samajwadi Party and the BJP specifically will react to this. But you see, what CJI said is something which he felt. It was not a political program or a program which was organized by the legal fraternity. Now, he spoke about that how exactly there are some times in life when you get a case and you have to adjudicate a case, but you do not get to a solution. Sure. Then you pray to a God, pray to the God that that a solution is needed. That is what the CJI has said. Now we see that how abuses are being hurled at them, at him. This is something which is very, very shocking. Absolutely shocking. Stay with us, Mohit, as well as Sabyasachi, because the Bharatiya Janata Party has now responded to the kind of comments that have been made by Ram Gopal Yadav. The BJP has slammed those abusive remarks, and it said that it's their pattern to abuse. That's the claim coming from the BJP against the Samajwadi Party. Let's listen to what Shehzad Poonawala has had to say. तो केवल कांग्रेस पार्टी ही नहीं जो कहती है संविधान का अपमान कांग्रेस की पहचान, अब समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का ही स्टैंड है। ये अपशब्द जो बोले गए हैं रामगोपाल यादव की तरफ से, ये बताता है कि ये पूरे अलायंस का एजेंडा है। अलायंस का एजेंडा है कि संविधान का अपमान, यही हमारी पहचान। संविधान की बातें तो करते हैं, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किस प्रकार की गालियां बकते हैं। पहले संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को गाली, राष्ट्रपति को गाली, राष्ट्रपत्नी बोला था, ईवल मानसिकता का बोला था, फिर ईवीएम इलेक्शन कमीशन को गाली चुनाव हारने पर, और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतनी गालियां बक रहे हैं। ये दिखाता है कि ये संविधान के नहीं, ये केवल परिवार तंत्र के लोग हैं। परिवार तंत्र में यकीन रखते हैं, लोकतंत्र में यकीन नहीं रखते। Well, let me go across to Sabyasachi. Sabyasachi, hasn't this become part of a recurring trend now? Because even, of course, after the entire controversy involving the Ganesh Puja at the Chief Justice of India's residence and the Prime Minister's attendance there, and to now, of course, just because Justice Dhananjay Chandrachud has made a personal remark in his personal capacity at an event in his native village, you see the opposition responding in such a crass manner. Of course, they have a right to disagree, but Ram Gopal Yadav's comments clearly crossing a line. Well, that's right, Siddharth. See, the Chief Justice D.Y. Chandrachud made this particular remark in his personal capacity. He was not there on any political event or law program. Now, D.Y. Chandrachud just expressed his personal feelings over there, how in difficult times he look up to God. Now, this particular statement can be made by anyone, but on the other hand, we are seeing that criticism can come on the statement made by Justice D.Y. Chandrachud, but the Samajwadi Party leader Ram Gopal Yadav somehow have crossed the limit by abusing the Chief Justice. So clearly all limits are being crossed by certain political parties and certain political leaders. See, the Congress had been opposing Justice D.Y. Chandrachud from the beginning. He has made this remark. In fact, the Congress went on to say that the history will observe Justice Chandrachud as a hypocrite as well as a deceptive person. So these are kind of remarks that has been coming in from the opposition side, and mostly of the India Alliance parties, be it the Congress, be it the RJD or the Samajwadi Party. So, all of them I just need to interrupt you for a moment because we have Mr. IP Singh of the Samajwadi Party joining us right now. Mr. IP Singh, सबसे पहले, do you condemn what Mr. Ram Gopal Yadav has said? सवाल ये है कि प्रोफेसर साहब ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने गाली दी है सर। ये है कि आप बात को समझने की जरूरत है कि जिससे आप गाली कैसे समझे, अब्यूज को कैसे समझे। कोई एक तरीका होता है, अगर डिसएग्री करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिमार्क से, एक तरीका होता है उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए। उन्होंने अब्यूज क्यों यूज किया, गाली क्यों यूज की उन्होंने? बिल्कुल नहीं किया है। ये झूठा और मनगढ़ंत बातें हैं। सवाल ये है कि जब सर शायद आपने उनकी बाइट नहीं सुनी, लेकिन बताइए आप क्या कह रहे थे। अरे मेरी बात, मुझे अपनी बात को कह लेने दीजिए। देखिए, जिस तरह से सीजीआई ने अपने घर पर प्रधानमंत्री को बुलाया, जिस तरह से उन्होंने उनके साथ पूजा पाठ किया, जिस तरह से उम्मीदें थी, वह सब तार-तार हो
बट मिस्टर आईपी सिंह, इस मुद्दे के बारे में बात कीजिए। आपने वो 1045 पन्नों की जो जजमेंट है, अयोध्या की जजमेंट, क्या आपने पढ़ी है सर? सवाल ये कि न उस जजमेंट में कहीं पे लिखा है कि हम भगवान से प्रेरित होकर ये जजमेंट दे रहे हैं? सवाल भगवान से प्रेरित होके तो उनसे देश तत्वों के आधार पर वो पूरा जजमेंट लिखा गया है। आप प्लीज वो जजमेंट एक बार पढ़िए। और क्योंकि आपने कहा कि रामगोपाल यादव ने कोई गलत बात नहीं रखी, ये आपका बयान है, प्लीज एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला है। मिस्टर आईपी सिंह, प्लीज हैव द पेशेंस टू लिसन इन टू व्हाट मिस्टर रामगोपाल यादव सेड एंड देन आई विल कम बैक टू यू फॉर अ रिस्पॉन्स। कोई कमेंट नहीं करा, ये छोड़ो क्या सर, ये जो जब भूतों करते हो मुर्दों भूत बन जाते हैं, जब से पीछे पड़ जाते आपको जी कौन सब कहाँ है? अब तो आपकी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। नहीं सर, रविवार की बात है, सीजीआई का बयान आया। तो जो तमाम इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? आपने सुन ली बात, अभी अपनी बात कहिए सर। मिस्टर आईपी सिंह जी बोलिए। जी, आपने उनकी बयान सुनी, रामगोपाल यादव जी की बयान सुनी आपने, अभी बताइए आप क्या करें। सवाल है, उन्होंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा है। देश की न्यायपालिका से काफी उम्मीदें रहती हैं। जो सरकार है, अगर न्यायपालिका उसकी हाँ में हाँ मिलाएगी, उसके हिसाब से चलेगी, तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठेंगे। और जो सर, ऐसे काफी जजमेंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ भी जजमेंट्स दी हैं। आप एक बार फिर से वो बयान बाद में सुनिएगा। थैंक यू मिस्टर आईपी सिंह फॉर जॉइनिंग अस, बट योर डिफेंस ऑफ राम गोपाल यादव्स comments are absolutely unacceptable. We have two more guests joining us right now. We have Rahul Ishwar, activist, joining us, as is Dr. Nikul Patel, leader from the Congress party. Mr. Patel, coming to you first and foremost, you heard the statement that was made by your India bloc colleague, Mr. Ram Gopal Yadav. Do you condemn it outright? Firstly, I would like to say why after so long we are going to discuss this, because the Chief Justice of India had given a statement regarding believing in God. Okay, fine, because we believe that Supreme Court always gives judgment based on the facts and figures submitted to the court of law. And that is why some statement has been made. Definitely that are not, we can say that we condemn that statement, whatever the it should not cross the limit whenever into a political platform. You can criticize. We are criticizing the statement of. You have every right to criticize the statement, but yes, the Congress party has now come out and slammed Ram Gopal Yadav for his remarks. You've condemned it. Mr. Rahul Ishwar, a quick response from you, sir. Country is Please remember, criticizing and abusing are different. And Chief Justice is holding one of the most significant posts in India. And we all know he's a great liberal judge too. He said a spiritual statement. He is not giving a social statement or a legal statement. It's not a matter of legality, but a matter of spirituality, where he said, I am praying to God for a peaceful solution. Yes. And please don't make a mountain out of a molehill. Please don't make an issue out of a non-issue. Absolutely. But Mr. Ishwar and Mr. Patel, thank you for your responses. I'm so sorry I have to cut this short because we're slipping into a short break. But a condemnation coming from the Congress party as well. Absolutely unacceptable remarks made by Mr. Ram Gopal Yadav. We're taking a short break. See you on the other side.